to everyone. Today I am going to discuss the unit I second chapter ecosystem. So first we will discuss about what is ecosystem. Ecosystem word from my ecosystem mane ko. Ecosystem mainly consists of two words, that is eco plus system. Eco means environment and the system means interaction and interrelationship between living and non-living things. Okay, environment is जहाँ भी living organisms रहिले बा non-living organisms रहिले ସେମାନେ परस्पर सहित ସବୁବେଳେ interaction ବା interrelationship ରେ ରୁହନ୍ତି. ଗୋଟେ living organisms ଆଉ ଗୋଟେ living organisms ସହିତ ରହୁଛି, ଗୋଟେ living organisms ଆଉ ଗୋଟେ non-living organisms ସହିତ ରହୁଛି. ତ ଯୋଉ living organisms ଆଉ ଗୋଟେ living organisms ସହିତ interrelationship ରେ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି biotic. ଆଉ ଯଦି living organisms ଟା ଆମର non-living organisms ସହିତ interact କରୁଛି ତାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ଆମର abiotic environment. So what is ecosystem environment? This is the definition of ecosystem. What is the definition? It is a natural unit consists of biotic communities and their abiotic environment. So ecosystem को बोलते हैं it is a natural unit, that is natural system. जो देखिए तो दूसरा system जो biotic communities से मैंने क्या बोलते हैं they interact with their abiotic environment. Okay. Then next बोलते हैं ecosystem का. This term ecosystem was coined by or introduced by H.G. Damsgaard in 1935. Okay, in 1935. Next, we will discuss what is the organization or components of ecosystem. Mainly, there are two components of ecosystem. One is biotic components, and the other is abiotic components. What is biotic components? Biotic components, whenever a living organism interact with their living organism in living environment, then it is known as biotic components. Likewise, when the living organism or all the non-living parts of environment is known as abiotic components. Further, the biotic component is divided into producers, consumers, and decomposers. All the green plants and some photosynthetic bacteria are known as producers, or it is also known as autotrophs. Autotrophs. Autotrophs means auto means cell, trophs means to food, but to synthesize food. So the organism which synthesize their own food is known as producers, or it is also known as autotrophs. Okay. Then next, what is this? Consumers. What is consumer? All the consumers, all the organisms that cannot synthesize their own food and they depend upon the food for the other organisms, they are known as consumers. It is of three types: primary consumer, secondary consumer, and tertiary consumer. Consumer is also known as heterotrophs. Heterotrophs. They cannot synthesize food. ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ. So that depends upon the other organisms. That means all the consumers are depends upon the producers for their food. ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେ? ସେମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବେ. ତ କନଜ୍ୟୁମର ତାଙ୍କ ଲେଭେଲ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ କନଜ୍ୟୁମର, ସେକେଣ୍ଡାରୀ କନଜ୍ୟୁମର and tertiary consumer. ଆମ ଅଧ୍ୟୟନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରାଇମେରୀ କନଜ୍ୟୁମର is also known as herbivorous. They eat herbs. Then secondary consumer is also known as carnivorous. They eat herbivorous. Then the last tertiary consumer is known as top consumer or omnivorous or top carnivorous. Okay, this is all about the consumers. Then the next one is decomposer. Decomposer means all the organisms, both producers and consumers, after their death they become decomposed by the help of decomposers, by the help of activities of living microorganisms. So they are known as decomposers. Decomposers includes bacteria, virus, and some microorganisms. Then discuss about the abiotic components. What is abiotic components? All the living things present within the environment forms abiotic environment. Abiotic components. Environment is living organism को
ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯାହା ନନ୍ ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍ ରହିଲା ସେମାନେ କ'ଣ ଫର୍ମ କରନ୍ତି ଏବାୟୋଟିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇନଟୁ organic substance, second one is inorganic substance, and the third one is climatic system. First one is organic substance, and next inorganic, and the last one is climatic system. Organic system को mainly carbohydrates, protein and fats. They are known as organic substances. And the inorganic substances, hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen, sulfur, etc. is known as inorganic substances. Plant रो तर कैपेसिटी नहीं से माने ऑर्गेनिक सब्सटेंस को केबे भी कंज्यूम करि पारबे नहीं से माने कोन कोंदी ना तमर जहां भी सब सब्सटेंसेस होइले ताको इनऑर्गेनिक फॉर्म में कंज्यूम करदी बायोटेक करदी then convert inorganic substances into organic substances like carbohydrate, protein and fat. For example, photosynthesis. What happens in photosynthesis? In photosynthesis, the plants consume carbon dioxide from the environment and trap energy from sun. Then they convert inorganic substances to the carbohydrate or the glucose. And the next one is climatic system. Climatic system is your air, water, soil, temperature, humidity. They are known as climatic system. So these two systems, biotic components and abiotic components, forms the ecosystem. Ecosystem means by ecosystem कहले हम तीनटा component को बुझबा गोटे होछि abiotic component and second one is abiotic component. Biotic component cannot be form ecosystem without the help of abiotic components. Similarly, abiotic components cannot form ecosystem without the biotic components. So they are interdependent. देखो ସେମାନେ परस्पर को डिपेंड କରୁଛନ୍ତି. abiotic component केबे भी चाहे alone environment रहि परिबो नै किंबा biotic केबे भी एकटे होई परिबो नै तो ସେମାନେ पूरे environment रे स्टेबल हे रहे पे और environment को बैलेंस कर रखे पे. So there is most an interaction or interrelationship between the living and non-living things. Okay. Next we will discuss about the patterns of ecosystem. On discussion करना patterns of ecosystem. Next we will discuss about patterns of ecosystem. So what is the meaning of patterns? As you know, all the living organisms, जत्ते living species अछंती सेमाने environment रे uniformly किंबा randomly distributed रही नाहंती. Rather सेमाने कोन कोंती according to the climatic condition, air, temperature, humidity अनुसार plant रो तारो density टा गोटे locality रो आउट locality को vary करे. कोन सोटे local ले अधिक plant थिबे आ कोन सोटे local ले कम plants थिबे. That depends upon the climatic condition of their habitat. So this is known as patterns of ecosystem. It is of three types: zonation, stratification, and the last one is succession. What is zonation? When the species occurs horizontally along with the ground surface. Zonation में कौन हुई ना species उड़ा को horizontally ground surface तो horizontally सेटा कौन करिबो ना vary करिबो. Next, stratification. In this stratification or in this pattern, species occurs vertically. So vertically arranged and it is determined by the height of the plants. एटी को करिबो ना प्लांट रो हाइट अनुसार हम डिटरमाइन करबा ये केले तमरो स्प्रेड हे. तो फर्स्ट हो तमरो ग्रास रो हाइट कम रहबो, देन का हाइट रहबो अधिक फॉर, देन तम स्ट्रॉक, देन होची ट्री. तो एटी गुड प्लांट रो बा स्पेसीज रो हाइट अनुसार डिटरमाइन करजबो जे को जगह केते रहउची. सो व्हाट इज stratification? Now when the species occurs vertically and determined by the height, it is known as stratification. Then the last one is succession. What is succession? Now in succession, one community is replaced by another community. Replaceable. प्रथम गोटे community थिबो, then
डेथ हिसाब से सेठी पड़ी के डिकम्पोज हेबे देन जे कोन करबे से कम्युनिटी डेवलप करबनी बरम इंस्टेड ता बदल रे आउट कम्युनिटी जे तयार हेबो सो एटी कोन होची ना वन कम्युनिटी इज रिप्लेस्ड गोटे कम्युनिटी रिप्लेस हे होची यहां द्वारा बाय अनदर कम्युनिटी दिस इज नोन एज सक्सेशन नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम what is function the biotic and abiotic components of an ecosystem closely linked with each other to carry out some function जहाँ हमें कहले कि एनवायरमेंटल दीटा कंपोनेंट रोची दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक सो से माने सब परस्पर सहित इंटरैक्ट करछंती इंटरैक्ट करके से माने किछि फंक्शन को बा किछि कार्य को से माने क्यारी करंती हैला सो दिस फंक्शंस बा दिस प्रोसेसेस आर नोन एज फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम function of ecosystem so what is the function of ecosystem such as productivity then decomposition energy flow and nutrient cycle ये जो चारटा रहला productivity decomposition energy flow and nutrient cycle this is known as the function of ecosystem में किसी कार्य होची से कार्य कहां द्वारा होची by the help of by the link of biotic and abiotic components both biotic बा तुम लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से माने परस्पर सहित इंटरैक्ट करके ए चारटा फंक्शन मेनली कैरी आउट करथांती फर्स्ट प्रोडक्टिविटी रहला देन डिकम्पोजिशन एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल सो लेट अस डिस्कस अबाउट प्रोडक्टिविटी व्हाट इज प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग द photosynthesis process रे कोन होई ना ऑल द ग्रीन प्लांट्स synthesize their food by using energy obtained from sunlight and carbon dioxide water then they produce carbohydrate or glucose so mane khadya tayar karti so what is productivity the amount of biomass produced during photosynthesis by plant is called primary production so se kon kochi na tomar jo plants द्वारा photosynthesis समय रे जेतिकी प्रोडक्शन हुए that is known as primary production and what is productivity the rate of production is known as productivity केते रेट रो को रेट रो पता जो रेट ता केते रोची ताको कहौ जमा productivity then further primary productivity is divided into gross primary productivity and net primary productivity what is gross primary productivity total amount of energy fixed in producer in unit time is called GPP or gross primary productivity तो plants रा photosynthesis समय रे जेति की प्रोडक्शन कला that is known as primary productivity but जेति से प्रोडक्शन करूची सब जाको प्रोड्यूसर बॉडी भीतर फिक्स हे कि रहू नाही किछ तो कोन होची ना नष्ट हे होची तो जेति की फिक्स हे कि रहूची प्लांट बॉडी रा that is known as GPP or gross primary productivity. So primary productivity is divided into gross primary productivity and net primary productivity. Then gross primary productivity kono amount of energy fixed in producer in unit time. जतिकी से फर्स्ट से प्रोड्यूस करला photosynthesis that is primary productivity. जति ता बॉडी पर स्टोर रेट होची that is gross primary product. Next को होची net primary productivity. What is this? The amount of stored organic matter in plant after respiration. Plant भी respiration करूची ता बॉडी मेटाबॉलिज्म होची तो जति से प्रोड्यूस करला तारा कोन फूड प्रोड्यूस करला किछि तमर फिक्स हे रहला फिक्स हे सला परे आ किछि तरह रेस्पिरेशन एंड तारा मेटाबॉलिज्म रे यूटिलाइज हे जाउची तो आफ्टर द यूटिलाइजेशंस ऑफ एनर्जी इन रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म other are stored in the plant tissue this is known as net primary productivity so NPP equal to GPP minus R NPP net primary productivity GPP gross primary productivity that is storing होची त कोची gross primary productivity रो किछि तमरो respiration and metabolism रे यूटिलाइज हे जाउची so GPP रो जति तमरो यूटिलाइज हे गला नेक्स्ट जहा रहले that is NPP and it is available for the consumption of heterotrophs or consumers ए जो NPP टा रहला ए जो प्रोडक्टिविटी को होची प्रोडक्टिविटी अंडर द नॉलेज प्राइमरी प्रोड्यूसर gross primary productivity net primary productivity all are known as producers जो प्रोड्यूसर को के खाउची हे तमरो से के तमरो हेटेरोट्रोफ्स बा तमरो कंज्यूमर्स
तो जो एनपीपी रहिला नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इट इज अवेलेबल फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स। नेक्स्ट कोन होची द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर होतबा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कोन द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। मतलब कोन प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर को के कंज्यूम कला कंज्यूमर्स बा तमर हेटेरोट्रॉफ्स। तो हेटेरोट्रॉफ्स खाइ साला परे ता बॉडी भीतर जहां भी स्टोर हेक रहउची दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। एंड द लास्ट वन इज नेट productivity. What is net productivity? That is the stored organic matter not consumed by the heterotrophs. एटा तमर हेटेरोट्रॉफ्स मानक द्वारा कंज्यूम हो नाही पर कोन होची से प्लांट बॉडी रे स्टोर हेकी रहउची एटा कहतो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम रे हमर चारटा फंक्शन अछि। फर्स्ट वन इज प्रोडक्टिविटी एंड द सेकंड वन इज डिकम्पोजिशन, थर्ड वन इज energy flow and the fourth one is nutrient cycle। तब फर्स्ट फंक्शन वाला प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट फंक्शन कोन होची तमरा डिकम्पोजिशन। एटा होची सेकेंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम डिकम्पोजिशन। All the producers and consumers after their death सेमानकर डेथ पर कोन होची ताकर रिमेनिंग पार्ट्स एनिमल्स को ह्यूमंस को प्लांट्स को तामर जो रिमेनिंग पार्ट्स होला से माने एक्युरेट रहंती नाही रेदर दे आर डिकम्पोज्ड बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इट इज नोन एज रिड्यूसर्स। फिर कोन होची ना डिकम्पोजर कोन भी ना डिकम्पोजर प्रोसेस रे तमर प्रोड्यूसर्स रहले कंज्यूमर्स रहले से माने डिकम्पोज होंदो केमति होंदी बाय द हेल्प ऑफ microorganisms or they are known as decomposers or कोन कहउची रिड्यूसर्स। देखो या किछि प्रोसेस होची डिकम्पोजिशन में कोन होय ना फर्स्ट तमरो जति के डेड रिमेनिंग्स रहला प्लांट्स को एनिमल्स को ह्यूमंस को बा जहार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होले तांकर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर रहला से में कोन होते ना ग्रेजुअली डिकम्पोज टू फॉर्म लास्ट प्रोसेस कोन कहउची ना मिनरलाइजेशन प्रोसेस। तो फर्स्ट जो फॉलेंस रहला तमरो को प्लांट रो तार फ्लावर्स को फ्रूट को किमा तार स्टेम्स को से में झड़ी पड़ले पर कोन बना से में डिकम्पोज करी लास्ट तमरो कोन होंदी ना ह्यूमस बा खतर कन्वर्ट होंदी देन लास्ट प्रोसेस कोन होंदी ना मिनरलाइजेशन प्रोसेस रे कोन तमरो एनवायरनमेंट बा तमरो सॉइल सहित डिसॉल्व हो जाते। ओके तो फर्स्ट प्रोसेस कोन होची ना तमरो डॉग प्रथमे तमरो से प्लांट रिमेनिंग बा प्लांट मैटेरियल रहला से में डिकम्पोज होती से डिकम्पोज कोन कहउछ हमरो ना डॉग डॉग देन ता पर टिके डिकम्पोज हो कहउची लिटर। ओके तो फर्स्ट तो हमर किछि ओलिया नै का माने खत गुडा पकोचनी ता माने कोन ओलिया भीतर कोन रहउची किछि काठी कुटा पत्र रहउची तो से तो एका बेले पडुनी ग्रेजुअली में आस्ते आस्ते पडुची तो तांको भीतर किछि होचनी फ्रेश आ किछि होचन तमरो माने पार्शियल डिकम्पोज हे होचनी तो पार्शियल डिकम्पोज पार्ट ऑफ होती लिटर। देन कोन होची ना आंको भीतर कोन होई जेटा वर्षा हुए कोन हुए तमर किछि ऑर्गेनिक बा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ता धोई हेकी माटी रा बहुत तोड़ को चली जाए ए प्रोसेस को हम कोन कहती लीचिंग। This is known as leaching. So the first step is known as dog. In dog, all the remaining dead organic matters are decomposed. Then next comes litter. In this process, the dead remaining parts are decomposed partially. Then some amount of organic or inorganic substances are leached. But the धोई हेकी गुड़ी जाती ना the deep layer of the soil. They are known as leaching. But this process is known as leaching. Then last one. ना से जो लीचिंग बा जो मेटर्स रहिला से ग्रेजुअली तो डिकम्पोज हेकी उटे डार्क ब्राउन कलर रो कंपाउंड रे कन्वर्ट हे जाय से डार्क ब्राउन कलर रो सब्सटेंस को हम कोन कहती ह्यूमस बातवा मोरे कोन कहती खत ह्यूमस आ तमरो फर्टिलाइजर हम ताको यूज करछु एमोटा को तमरो खत बोली कहती ए ह्यूमस बा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ the process of formation of humus is known as humidification.
Humidification. And the last process is mineralization. In mineralization process, all the dead organic matters are converted into carbon, oxygen, nitrogen, sulfur, and they return back to the environment or they dissolve in the soil. So this is the decomposition process में तुम्हारे dead organic remains of plants, animals and humans are decomposed by the help of microorganisms or decomposers or reducers. So this is the steps. In these steps, the dead organic matters are decomposed gradually. How it's formed of, then later, then leaching, then the process of humidification, humus, and the last process is mineralization process. In this process, all the organic matters or inorganic matters are converted into the minerals. Okay, thank you. Next, the other two functions, energy flow and the nutrient cycle.